अनिमादिस्तुतिः। अथ श्रीकालीविलासतन्त्रे चतुस्त्रिंशत्पटलः। शिव उवाच अकारादिच्छकारान्तं चन्द्रबिन्दुसमन्वितं प्रजपेदनुलोमेन विलोमेन मनुं ततः इष्टमन्त्रं ततो जप्त्वा अक्षरादीन् जपेत् ततः तदा पूतो भवेन्मन्त्रः शापादिदोषसंयुतः। अनिमे कामिनी मातः नमस्तुभ्यं नमो नमः। कौमुदित्वनिमे नित्यं ज्योत्स्रारूपिणे ते नमः। शशिवक्त्रे नमस्तुभ्यं सुलोचने नमो नमः। विरूपाक्षि नमस्तुभ्यं विशालाक्षि नमो नमः। अनिमे वैष्णवितुभ्यं मौनाक्षि चानिमे नमः। नमस्ते नर्तकी देवी विद्यारूपे नमो नमः। अनिमे निर्मले तुभ्यं सिञ्जिनिते नमो नमः। ज्योतिर्मये नमस्तुभ्यं घोररूपिणि ते नमः। सद्यो जातमुखादेश स्तवराजो विनिर्गतः। श्रीवामदेव उवाच चन्द्रिके लदिमे तुभ्यं नमस्तुभ्यं नमो नमः। शङ्खहस्ते नमस्तुभ्यं चन्द्रास्ये ते नमो नमः। हरिणाक्षि नमस्तुभ्यं नमो नमः। सुलोचने नमस्तुभ्यं शङ्खिनि ते नमो नमः। शङ्खहस्ते प्राप्तिसिद्धे चक्रहस्ते नमो नमः। हे चक्रिणी नमस्तुभ्यं विद्यारूपिणि ते नमः। विद्योपप्राप्तिसिद्ध्यर्थं नमस्तुभ्यं नमो नमः। वामदेवमुखादेशस्तवराजो विनिर्गतः। श्री अघोर उवाच बाणितेन नमस्तु भद्र काम्यसिद्धिस्वरूपिणि प्रकाम्य विमले तुभ्यं विशालाक्षे नमो नमः। हे विशाले नमस्तुभ्यं विषमे च नमो नमः। अघोरमुखसम्मुक्तः स्तवराजः प्रकीर्तितः। श्री ईशान उवाच नमस्ते महिमे शोभे स्वरूपे ते नमो नमः। सुन्दरी महिमे तुभ्यं गन्धवाहे नमो नमः। गन्धिनी महिमे तु भद्र नमस्तु भद्र नमो नमः। गगने च नमस्तु भद्र गानरूपिणि ते नमः। रुद्ररूपि नमस्तुभ्यं ईश्वरी त्वां नमाम्यहं। श्रीतामस उवाच पिनाकिनि नमस्तुभ्यं वशित्वा सिद्धिरूपिणि शङ्कररूपिणि तुभ्यं हररूपिणि ते नमः। कल्याणि हे नमस्तुभ्यं हररूपिणि ते नमः। मङ्गले हे नमस्तुभ्यं नमस्ते सिद्धिरूपिणि नमस्ते मङ्गले नित्ये कोनविंशतिसंयुते कामावसायिते कीर्ते नमस्तुभ्य नमो नमः। मनोरूपि नमस्तुभ्यं नमो नमः। बुद्धमातर्नमस्तुभ्यं विलक्षणि नमो नमः। नानारूपमयि तुभ्यं नमस्तुभ्यं नमो नमः। य इदं पठति स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं शिवसन्निधौ सहसा मन्त्रसिद्धिः स्यात् लक्षावर्तानमात्रतः। एतत् स्तोत्रं महेशानि कलिकाले पठेत् सुधीः। एतत् स्तोत्रं विना देवी अन्यस्तोत्रं पठेत्तु यः सर्वयस्य भवेत् व्यक्त चित्तस्य वचनं यथा। एतत् स्तोत्रं पठित्वादो ततोऽन्यं कवचं पठेत्। पठित्वा सिद्धिमाप्नोति न च मे वचनं मृषा। विना वोच परिज्ञान कवचाध्ययनं वृथा। वर्णस्तवमभिज्ञाय स्तवमन्यं वृथा भवेत्। वर्णतत्त्वमभिज्ञाय पुराणं प्रपठेतु यः शत्रुन सर्वदेवानां भूत्वा याति परत्र च। ऋणी भूत्वा च पापिष्टो बेकयोनिषु जायते। ब्रह्मदिनमभिव्याप्य बेको भवति निश्चितं। दिनान्ते तु महेशानि नानायोनि प्रजायते। सभ्रष्टः स च पापिष्टो न पुनर्मानुषो भवेत्। श्रीगणेश उवाच पार्वत्या निकटे स्थित्वा यच्छ्रुतं शिव वकृतः तदद्य कथितं सर्वं काली विलाससम्मतं। रहस्यं सर्वबीजानां वर्णनामुनिपुङ्गव दिवारात्रपरिज्ञानप्रथमं प्रहरं तथा। विना यत्क्रियते विप्र सर्वं विधिविरम्बनम्। अष्टाङ्गयोगी योगविज्ञानं भक्त्या ते परिकीर्तितं। न योगेन विना मन्त्रो मन्त्रेण विफलो हि सः। द्वयोरभ्यासमात्रेण मन्त्रसिद्धिः प्रजायते। विना द्वेकतराभ्यासं मन्त्रसिद्धिर्न जायते इति अनिमादिस्तुतिः समाप्ता।